dear students, myself Gangadhar Solanke, and I welcome you all to the MCGM's virtual classroom. Hello my dear students, today's our subject is Environmental Studies Part 2 and the heading of our textbook is How We Came to Be. Now in this textbook, our last chapter was From Shelters to Village Settlements. Now in this textbook, we are studying about the journey of humankind from the beginning towards the settling of life, and in that the last chapter was from shelters to village settlements. In that we talked about shelter, then seasonal camps and village settlement. Now our today's topic is beginning of settled life, how it began and what exactly the man did to get settled. So the points which we are going to cover in this topic are beginning of domestication of animals and agriculture, special skills and various occupations, community life based on mutual cooperation, structure of houses, village settlement, kinship and family. Now if we people just think about all these points, then one thing which is very sure, we can say that the domestication of animals and agriculture, these both things played very important role in the settling of human life. Domestication of animals, today we are having number of animals which are like pet animals और वाइल्ड एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं, आप लोगों ने उसके बारे में पढ़ा है, आपको पता है. But the domestication of animals, which was the very important step in the settling of human life, because these domesticated animals help a lot, and today also helping a lot in our day-to-day life or in our daily routine. Nowadays, we are having not that much use of them because of the transportation facilities and all that, but today also for agriculture, these animals play very important role. So today's first point is domestication of animals. Now domesticated animals like dog, goat, sheep, cattle, buffalo, etc. Now you can add many more in this list, और भी कुछ domesticated animals है जो आप इस list में add कर सकते हो, but basically which are given in our textbook, dog, goat, sheep, cattle, buffalo, etc. are useful to man in many ways. Now we can write down the uses of domesticated animals. उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के यूजेस नहीं बल्कि एक एक एनिमल का अलग अलग यूज भी हम लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल डॉग, प्रोटेक्शन ऑफ आवर हाउस और प्रोटेक्शन ऑफ द फार्मर, जो फार्म है उसका भी प्रोटेक्शन करने का काम डॉग करते हैं. देन गोट गिव्स अस मिल्क, और भी कुछ फायदे आप लिख सकते हो. देन शीप गिव्स अस वूल. देन कैटल, buffalo, these are useful to man in many ways. Now there are the three main steps in the domestication of a species of any animal. Now today we are having dog, goat, sheep, cattle, buffalo and many more animals as domesticated animals, and these animals are living with us, हमारे साथ रह रहे. जब अगर हम कैट और डॉग की बात करेंगे, वो तो बहुत सी फैमिलीज में पार्ट ऑफ फैमिली हो गए, उनके साथ ही रहते हैं एज अ फैमिली मेंबर. बट ये शुरू कहाँ से हुआ, वेयर इट वाज स्टार्टेड, ये सब शुरू कहाँ से हुआ कि ये सब वाइल्ड एनिमल्स थे या फिर जंगली जानवर थे, और उन्हें हमारे साथ लाना, उन्हें ट्रेन करना, फिर हमारे कामों के लिए उन्हें तैयार करना, ये सारी जो प्रोसेस है उसके लिए बहुत टाइम गया. एंड if we talk about the steps or the process, then in that the first one is capture of the wild animals. Today it is very easy for us to understand that the dog is our friend or cat is playing very important role in many families. Important role in the sense, जैसे पेट एनिमल है घर में तो बच्चों को अगर पसंद है तो उनके साथ रहेगा, या फिर एज अ फैमिली मेम्बर, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि उन्हें ट्रीट किया जाता है.
बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन एनिमल्स को प्यार करते हैं, बट वेयर इट वाज स्टार्टेड, कैप्चर ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। पहली चीज क्या हुई, ये जो वाइल्ड एनिमल्स है उन्हें पकड़ना, कैप्चर। Then the second one, taming the captured animals, that is training them to live with humans. It was not easy for the humans and also not easy for the animals. जैसे समझ लो पहली बार किसी कुत्ते को पकड़ा गया है, या फिर किसी गोट को, या फिर किसी बफेलो को, जो कि एक वाइल्ड एनिमल है, और फिर उसे पकड़ना, एंड टू ट्रेन टू लिव विथ ह्यूमंस, ह्यूमंस के साथ रहने के लिए ट्रेन करना, इसमें कई साल गए होंगे, और धीरे 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 फिर ये एनिमल्स ट्रेन हुए। सो not only capturing the wild animals but also taming was also very important step in domesticating the animals. Then the third one, obtaining useful materials like milk, etc., from them and training them to work for humans as beasts of burden. Now in the फार्म हमने देखा है कि बहुत सारे एनिमल्स है जो फार्म में काम करते हैं। हॉर्स है, हॉर्स का भी यूज़ ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहले किया जाता था, या फिर बैटल फील्ड पे लड़ाई में उसका यूज़ किया जाता था। लाइक दैट मेनी एनिमल्स आर देयर विच हेल्प्स अस। नाउ द three steps which you people have to keep in mind: capturing, then taming, and then obtaining useful materials. अभी जो हमारे आसपास एनिमल्स हमें दिखते हैं, जैसे डॉग है, हॉर्स है, सीप है, बफेलो है, इन्हें देख के आपको ये समझना है, अंदाज़ा लगाना है कि किस तरह से अर्ली ह्यूमंस ने इनको पकड़ा होगा जंगल से, फिर उन्हें कई दिनों तक ट्रेनिंग दी होगी ह्यूमंस के साथ रहने की, एंड देन फिर उनसे जो है यूजफुल मटेरियल्स को लिया होगा। जैसे हम कोई सर्कस देखते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि टाइगर है, लायन है, ये वाइल्ड एनिमल है, इनको ह्यूमंस के साथ रखा नहीं जा सकता, बट इन दैट सर्कस उन्हें जो इशारे दिए जा रहे हैं या फिर जो ऑर्डर दिए जा रहे हैं, उन ऑर्डर्स को वो फॉलो करते हैं। वाई? बिकॉज द फर्स्ट स्टेप कैप्चर, उन्हें कैप्चर कर दिया, कैप्चर किया। देन टैमिंग, उन्हें ट्रेन किया गया कि जो ऑर्डर्स उनको मिल रहे हैं उन ऑर्डर्स को फॉलो करना। एंड देन ऑब्टेनिंग यूजफुल मटेरियल्स। अभी टाइगर और लायन जो है सर्कस में हमें दिख रहा है, उनसे तो कुछ यूजफुल मटेरियल नहीं लिया जा रहा है, बट लोगों को वो सर्कस दिखा के पैसे कमाए जा रहे हैं। सो दीज वर द स्टेप्स: कैप्चरिंग, टैमिंग, एंड देन obtaining useful materials. Now the next point, when the third step is achieved, which one? Obtaining useful materials. The animal is supposed to be completely domesticated. सिर्फ कैप्चर करना और ट्रेन करना, यही दो चीज़ें नहीं, बल्कि जब थर्ड स्टेज जो है, थर्ड स्टेप जो है, वो जब अचीव की गई कि कुछ यूजफुल मटेरियल उस डोमेस्टिकेटेड एनिमल से लिया गया, देन इट वाज कॉल्ड दैट द एनिमल is to be completely domesticated. On the screen you can see the picture. Domesticating animals and keeping them for our own use is called animal husbandry. What it is called? Animal husbandry. Here also you can see wild pig and then the domesticated pig. जैसे जैसे उन्हें वाइल्ड से फिर डोमेस्टिकेट किया गया, उनमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस होते गए। दिस वन हियर यू कैन सी, हियर आल्सो डोमेस्टिकेटेड काउ। सो डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स एंड कीप देम फॉर आवर ओन यूज इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। सिर्फ उन्हें पकड़ना या अपने साथ रखना नहीं, बल्कि अपने काम के लिए उन्हें इस्तेमाल करना, यूज करना, दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। द डॉग इज द फर्स्ट एनिमल टू हैव बीन डोमेस्टिकेटेड। अब अगर हम डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो इट स्टार्ट्स विद द डॉग। डॉग के साथ स्टार्ट कर होती है, बिकॉज डॉग इज द फर्स्ट एनिमल टू हैव बीन डोमेस्टिकेटेड। द गोट एंड शीप वर डोमेस्टिकेटेड नेक्स्ट। सो डॉग फर्स्ट, देन गोट एंड देन शीप, और फिर धीरे धीरे और सारे एनिमल्स इस लिस्ट में आते गए। नेक्स्ट वन, एग्रीकल्चर, अगेन very important, which played very important role in settling the
ह्यूमन लाइफ एग्रीकल्चर, क्योंकि फूड की सर्च में जो ह्यूमंस इधर उधर भटकते थे, जंगल से यहाँ से वहाँ जाते थे, एग्रीकल्चर की वजह से वो एक जगह रुक गए. Archaeological evidence is available to show that agriculture first began about 11,000 years ago in Israel and in Iraq. Where it was started, where it was began. Agriculture first began about 11,000 years ago in Israel and Iraq. Women are credited to have started cultivation. So women started cultivation. They might have used pointed sticks to sow seeds. So again the thing which we have to give its credit to the women, because women have started cultivation with the help of pointed stick to sow seeds. And in order to help dig deeper into the soil, the stick was wetted using a perforated stone. Agriculture production increased. What it increased? Agricultural production increased considerably after the plow pulled by animals came into use. Now here, domestication of animals, first stage, and the second one, use of domesticated animal. So here, पहले एनिमल्स का यूज नहीं किया जाता था फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर, हाथ से किया जा रहा है या फिर ह्यूमंस कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्शन था वो कम था. बट हियर वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड कंसिडरेबली आफ्टर द प्लो pulled by animals came into use. Now one more thing here which we have to understand in today's time. अभी आज की अगर खेती हम देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई है. जैसे पहले डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हुआ, फिर उन एनिमल्स का खेती में यूज़ हुआ, बट आज उन एनिमल्स को भी रिप्लेस किया गया है विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का यूज़ होने लगा है, और कई चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का यूज़ हो रहा है. सो कंटिन्यूसली हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, और प्रोग्रेस में पुरानी चीज़ों को हटा के उसकी जगह पे कुछ नई चीज़ें आ रही है. जैसे वुमेन स्टार्टेड कल्टीवेशन, तो तब एनिमल्स का यूज़ नहीं हो रहा था, फिर धीरे धीरे एनिमल्स का यूज़ हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया, और अभी हम देख रहे हैं कि एनिमल्स का यूज़ हो रहा है, बट ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पर एनिमल्स की जगह पे ट्रैक्टर या और कई मॉडर्न चीज़ों का एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है. इन द previous lesson we have learned that people had to stay in one place because of the nature of agricultural work, क्योंकि वो खेत छोड़ के और जगह पे नहीं जा सकते थे. जो उन्होंने अपनी फील्ड में लगाया है उसके लिए उन्हें वहीं रुकना पड़ता था. So agricultural production increased considerably after the plow pulled by animals came into use. And then agriculture became the main source of livelihood, and today also in our country agriculture is the main occupation of the people, because number of people in our country lives in villages. Here on the screen you can see pointed stick and perforated stone used for sowing, here in this way, and then the plow pulled by bullocks. So how it changed from this to this. Next one now. Here also one picture. By this you people can understand how domesticated animals were used for the purpose of agriculture. Agriculture became the main source of livelihood, and then the people began to worship nature and various deities for good crops. So where it was started, today we are having number of religions and number of gods are there. अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग रिलीजन के अलग अलग गॉड है, और उन्हें प्रे किया जाता है. बट इट वाज स्टार्टेड हियर. कहाँ शुरू हुआ? नेचर से. जब इन लोगों को पता चला कि अरे हमें तो यहाँ से खाना मिल रहा है, हमें तो यहाँ से और कई चीज़ें मिल रही है, एंड देन इट वाज स्टार्टेड कि जो क्रॉप
फील्ड में है वो अच्छा आने के लिए, वो अच्छा उगने के लिए प्रेयर स्टार्ट हुए. People began to worship nature and various deities for good crops. Essential things like sharing of agriculture tasks and the security and water resources and the security of the village settlement gained importance. Here we are talking about the steps in beginning of settled life. So first thing, use of animals in agriculture, then sharing of agricultural tasks and water resources, and then the security of village settlements gained importance. People in the village settlements established some rules. Now today we are having number of rules where we are living in our society, और ये सारे रूल्स जो है कई बार लिखे हुए नहीं है, बट वी आर फॉलोइंग दीज रूल्स, क्योंकि ये जब सोसाइटी बनती गई वैसे वैसे ये रूल भी बनते गए. और हम बोलते हैं ना कि समाज में रहना है तो फिर ये करना पड़ेगा, समाज में रहना है तो हमें ये नहीं करना है. तो ये जो करना है और नहीं करना है, ये सालों से सोसाइटी के रूल्स बने हुए हैं, एंड वी आर फॉलोइंग दीज रूल्स. So people in the village settlements established some rules and customs to manage these things. Today also we are having number of customs and traditions of different festivals or different periods in our life. जैसे किसी का जन्म होता है या फिर डेथ होती है या फिर बीच में शादी है या फिर और कई चीज़ें हैं, उसके कुछ कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, ये सब धीरे 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 बनता गया. एंड टुडे वी आर हैविंग सिविलाइज्ड सोसाइटी जिसके अलग अलग नियम है और जिन्हें हम फॉलो करते हैं. बट हियर इन दिस लेसन वी आर टॉकिंग अबाउट वेयर इट वाज स्टार्टेड. ये सब शुरू कब हुआ और कहाँ से हुआ. सो 11,000 ईयर्स बैक इजराइल और इराक में खेती करना स्टार्ट किया लोगों ने, एंड देन धीरे 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 लोग सेटल होते गए. सो एग्रीकल्चर played very important role in settling down the human beings. Now the next thing, so a social system based on agriculture came into existence. This one is very important. आज भी हमारे बहुत सारे त्योहार, हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है वो खेती से ही जुड़ी है, क्योंकि इन आवर कंट्री वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, या फिर हमारे घर में खेती से रिलेटेड कुछ ना कुछ है ही. जैसे हमारा गांव है, अभी हम शहर में भी रह रहे हैं मुंबई में, लेकिन गांव है, गांव में खेती है. अगर खेती नहीं है तो खेती में काम करने वाले लोग तो हमारे आजू बाजू में है. सो इट प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, here on the screen you can see social system based on agriculture came into existence. Next point, special skills and various occupations. Next step to the agriculture. In the times before agriculture, people obtained food such as meat, fruits and roots by hunting and gathering, but could not store it for long time. And about this we people already learned. क्यों घूमना पड़ता था? क्योंकि एक जगह पे फूड नहीं मिलता था, और जो मिल रहा है इंक्लूडिंग मीट, फ्रूट्स, रूट्स, उन्हें गैदर करने का कोई सिस्टम नहीं था, उन्हें स्टोर करने का कोई सिस्टम नहीं था, एंड बिकॉज ऑफ दैट it was not long lasting. So all the men and women in the community were continuously engaged in getting food. But in the agricultural system, it became possible to store food grains for long periods. जब कलेक्ट किया हुआ फूड ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है तो सबको क्या करना पड़ता था? फूड के लिए इधर उधर घूमना पड़ता था. बट इन द agricultural system it became possible to store food grains for long periods. There was more food available
than was needed by the community. And the problem solved. फूड है तो उन्हें इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी. There was more food available than was needed by the community, and that's why some women and men began to get spare time for experimentation. किसके लिए टाइम मिल रहा है उनको? एक्सपेरिमेंटेशन एंड फॉर यूजिंग देयर नेचुरल क्रिएटिविटी to develop special skills. Now here we're talking about the skills. पहली ये बात हमें यहाँ पर समझनी है कि पहले क्या होता था, उन्हें फूड के लिए एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह घूमना पड़ता था, और जो फूड मिलता था वो भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता था. बिकॉज ऑफ दैट, the whole family, the whole family was engaged in getting food. But in agricultural system, or because of agricultural system, more food available than was needed. तो spare time मिल रहा है. What to do in that time? People of that period started experimentation. अलग अलग चीजें करना उन्होंने start किया, and at the same time concentrated on developing special skills. Now we'll talk about the skills. Here on the screen you can see the images. Members with such special skills were given work based on these skills. Now we're talking about the settled life. एक तरह से वो settle हो गए, और जिनके पास skills थे उन्हें particular वही काम दिया जा रहा था. Thus arose crafts like making earthen pots, beads, etc. It is believed that in the New Stone Age, women made earthen pots and other earthen objects by hand. Today we are not using that much earthen pots in our day-to-day life or in our daily routine, because we are having now steel and all other metals. But it was started with earthen pots. और ये समझना हमें यहाँ पर जरूरी है कि जो वुमेन बना रही थी वो अपने हाथों से बना रही थी. इट इज बिलीव्ड दैट इन द न्यू स्टोन एज वुमेन मेड earthen pots and other earthen objects by hand. So skilled people gain importance in that system. Now these images which gives us an idea about the nature of work. Here also you can understand from here to here. Everyone is doing his or her work, and by that you can understand how it was distributed on the basis of the skills. Here also you can understand the nature of work. Please subscribe the channel and press bell icon to get notifications. So my dear ones, this is all for today. Thank you very much. Stay home, stay safe, take care.